I hope you all are fine. This video is all about question number 3 of first worksheet of physics class 10. Now, what are simple machines or kinds of machine? In our daily life, we use different kinds of machine. All the machine, however complicated, may consist of one or more than one of the following 6 simple machine. Now, these are the following simple machine. Number 1, lever. Number 2, pulley. Number 3, inclined plane. Number 4, weight. Number 5, wheel and axle. Number 6, screw, jack. And number 7 is a screw, which is not included in our syllabus. Okay. Now, starting with what is lever and its mechanical advantage, which is the question number 3 of the first worksheet. So, first of all, before going to start, I want to recall your memory for some terms like axis of rotation. Axis of rotation is some bodies cannot move from place to place, but they can rotate about a fixed line or axis known as axis of rotation. Here in lever, it is called fulcrum. The fixed point, वो fixed point जो जिस पर lever attached होता है, उसको हम fulcrum कहते हैं. ठीक है. Here axis of rotation is fulcrum. Now the other term is force arm or moment arm. The perpendicular distance from axis of rotation to the line of action of the force is known as moment arm. Here we can use two terms which we can define it later. Now, first of all, lever, the simple machine used to lift heavy load consisting of a rigid bar made up of wood, iron or concrete and able to pivot on the fixed point. Here fixed point या axis of rotation जो है वो fulcrum है और इस simple machine को हम lever कहते हैं. Okay, at one end effort is applied and the other end load is being lifted by applying a small amount of force. Okay, the perpendicular distance between force and fulcrum. The perpendicular distance between force and fulcrum is known as effort arm or power arm. Yani this one is fixed point which is known as fulcrum and this one is effort applied. Yani effort arm is the distance, perpendicular distance between effort and fulcrum, and the load arm is the distance between load and the fulcrum is known as load arm, weight arm. ठीक है. fulcrum is the fixed point and fixed point से जो भी perpendicular distance load arm के दरमियान का होगा उसको हम क्या कहेंगे? load arm कहेंगे. Load arm can be denoted by capital D and effort arm can be written as small d. Okay. Now mechanical advantage of lever is first of all I can explain you by the figure of lever is on page number 137 in your book. You can see and hopefully you can understand. Okay. Mechanical advantage of lever. If as you know, अगर ये आइडियल मशीन है तो इसका आउटपुट किसके बराबर होगा? इनपुट के. सो हमें पता है कि आउटपुट बराबर होता है लोड इनटू लोड आर्म एंड इनपुट बराबर होता है एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म के. ठीक है ना. तो लोड को हम डिनोट करते हैं W से, लोड आर्म को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल D से. इक्वल टू दी एफर्ट. एफर्ट इज डिनोटेड बाय capital P into effort arm. Effort arm is denoted by small d. Now cross multiply the equations both the sides. We can have W upon P is equal to small d upon capital D. Here we can find out that W upon P is equal to mechanical advantage, यानी output
अपॉन इनपुट बराबर किसके होता है? मैकेनिकल एडवांटेज के, है ना। सो मैकेनिकल एडवांटेज के लिए हम कह सकते हैं कि डी स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी के बराबर हो गया। अगर डब्ल्यू अपॉन पी बराबर है एम ए के, तो एम ए बराबर किसके हो गया? स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी के, यानी लोड आर्म एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, यानी ओ ए अपॉन ओ बी, ठीक है ना। हेंस द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफर्ट आर्म। आप जितना ज़्यादा एफर्ट आर्म बढ़ा देंगे उतना ज़्यादा आपको मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा। कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं किसी भी लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज? बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म, यानी जितना हम एफर्ट आर्म बढ़ा देंगे हमें उतना ज़्यादा हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा। और बाय डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ वेट आर्म टू मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट है, ठीक है ना। अगर हमें बस ये जहन में रखना है कि अगर हम लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म बढ़ा देंगे तो हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा किसी भी सिंपल मशीन का, विच इज़ नोन एज liver. Now that's all for the third question. I hope my explanation can very easily understand by you.